I am the owner of the Godown, which was given on rent to another person. And my lord wanted to verify this part agreement. We have enclosed annexure 2. Number 2, FIR also says. जस्ट अ मिनट, किरायनामा आपने लगाया है जी हुजूर। ये किरायनामा कब का है? जी 2 लगाया हुजूर। एक एनेक्चर 2 है जो प्रायर टू अकरेंस है, बाद में फिर दूसरे को दिया, उसको भी हमने लगा दिया है। दोनों नहीं, किरायनामा ये राकेश आप कौन है? राकेश कुमार है? नहीं, हम है राकेश कुमार। सुनील कुमार को हम लोगों ने दिया है हुजूर। ये कब लगाया? ये हमें ये है हुजूर 25 जनवरी से हमारा दिया हुआ है, 2 वर्षों के लिए जी। और ये FIR कब का है? FIR हुजूर 1 मिनट, ये है 20 जुलाई 21 का। तो हमने क्यों मांगा डायरी? इसमें हुजूर ये 2 बात ये आ भी गई है एग्रीमेंट के बारे में। नहीं, कोई कारण होगा ना मुझे मांगने का। आपने लगाया ही है। एक और एग्रीमेंट लगाया है बाद में हुजूर हमने, दूसरा भी। वो गलती से हमारे हुजूर हमने उस दिन वो एग्रीमेंट दिखाया था। वो कौन सा एग्रीमेंट है? ये है जो दूसरी हमने एक कंपनी को जो दिया, उसका भी एग्रीमेंट हम लोग लगाया, वो जुलाई का है। तो बाय मिस्टेक हमारे लगता है, आई थिंक आई आर्गूड दिस केस, ये हमने दिखाया जो भी हो, ये हुजूर ने देखा। तो हुजूर ने कहा कि चूंकि एग्रीमेंट आपका बाद का है, तो उस समय हम तुरंत हुजूर रिप्लाई नहीं दे सके थे। नहीं, तो ये हमें बैकडेटिंग का लगता है फॉर द रीजन कि वो वो जो 23 जुलाई 2021 जो बाद का है, जी, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग इग्नोर आपके करने से तो होगा नहीं। आपने डॉक्यूमेंट लगाया है यहाँ, तो मैं देखूंगा। तो ये किस बात की? अग्रीमेंट ऑफ लीज एग्जीक्यूटेड MS दुर्गा डेट ही है, डेट ऑकरेंस के बाद का ही दिया हुआ है इसमें, पहले का डेट नहीं दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट भी 13 जुलाई को डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, 23 जुलाई का हमारा एग्रीमेंट। FIR कब बताया, कब का? 20 जुलाई का हुजूर। हम ये कहते नहीं कि पहले दिया, पहले हमने सुनील को दिया। और ये हुजूर 2 बात आ भी गई है केस डायरी के एक पैरा में। अभी तुरंत मैं बताता हूँ जी। ये आपने 21/1/2021 को 2 वर्षों के लिए दिया था जी हुजूर। तो आपने निकाला उन्हें कैसे? टर्मिनेट कैसे किया इसको? अभी तो बड़ा गोडाउन है हमारा। नहीं। हाँ। ये गोडाउन आपने किराया पे दे दिया सुनील कुमार को। जी जी। 25/1/2001 से टेनेंसी शुरू हुई 2 साल के लिए। दिस इज फॉर 2 years, so it would have normally expired on 25/1/2023। जी हुजूर। और ये 23 जुलाई 2021 को ही आप श्री सीमेंट गोडाउन का साइज हमारा बड़ा है, जो पार्ट था वो हम लोगों ने इसमें दिया एक्स्ट्रा पार्ट में। 2 एग्रीमेंट किया, क्योंकि एक पार्ट पहले दिया, दूसरे पार्ट का ये मिले तब हमने इसको दिया है। इस दोनों अग्रीमेंट में आप दिखाएं कि आपने लिखा है कि एनीथिंग इंक्रिमिनेटिंग इफ फाउंड इन द प्रेमिसेस यू वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ये 2 अग्रीमेंट से हमें डाउट हो रहा है कि ये सब गॉटन डॉक्यूमेंट्स है। दिस इज फॉर द पर्पस। नॉर्मली आई ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल इन सच केसेस, बट वेयर द क्लाइंट स्टार्ट्स क्रिएटिंग डिफेंस, then the court has problems. My lord, when the Godown was sealed, the High Court. Just a minute. The Godown must have been sealed. वो unsealed हुआ हुजूर हाई कोर्ट से। Unsealed कब हुआ? या वो हुजूर डेट है हाई कोर्ट के हुजूर। हम लोग हाई कोर्ट आए जी। ये ऑर्डर है हुजूर 3 दिसंबर 21 का। तो अब तो आप सील्ड प्रेमिसेस को आपने लेट आउट कर दिया टू अनदर। नहीं, 3 दिसंबर 21 को सील्ड। हाँ, ये आपने ये एग्रीमेंट किया है 23 जुलाई 2021 को, और ये ऑर्डर हुआ है 3 दिसंबर 2021 को हुजूर। वही तो कह रहा हूँ। तो डिसीलिंग के पहले आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दी? नहीं, उसका कारण भी दिया हुआ है हुजूर। 1 सेकंड अगर देखा जाएगा उसमें जी, ये पेज 26 पर देखा जाए जी, हमारी बात उनसे 1 जून 2021 को हुई है। डॉक्यूमेंट 13 जुलाई का लिया हुआ है और एग्रीमेंट होता है 23 जुलाई को। लेंगे ही नहीं वो। 11 months के लिए आपने लीज किया है, कमेंसिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2021। मगर it would not have been given into effect, it would not have taken its effect because it has been unsealed only in the month of December 2021. but sealing was done, my lord, on 20th July. The intelligence of the client is preventing the court from granting anticipatory bail, sir. I am so sorry. 2 things, but You have to come with absolute clean hands.
We understand you are the owner of a big Godown. Yes, my lords. Anything can be stored there by anybody. Many persons have access. Yes, yes. We will not saddle the responsibility on you. We have been granting bail day in and day Yes, out. yes, yes, But the moment the court gets the feeling that these documents have been prepared for the purpose of granting bail, we don't accept such documents. I'm telling you in a most transparent way. If I entertain doubt even for a minute, I shall not. Yes, my lords, if my lords have any doubt, then we can't say anything. No, But we will my be lords, recording this. One agreement, my lords, annexure 2. That agreement agreed. Yes, sir. That agreement, perhaps you had not shown it on the last occasion, therefore I had called for the diary. That Now, this agreement, during the pendency of this agreement, another agreement, then how do you say how many godowns you it's a have? big size go down, my lords. And so you segregated different parts? My lords, in those Let us see areas, the area. my lords, this area where the roads are old places, my lords, the long and big go downs are being made. And FIR के मुताबिक जो हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं पर नहीं है. नहीं वो तो वो कहाँ, वो तो मैं ऐसे ही ग्रांट कर रहा हूँ. आपके पास से रिकवरी नहीं है, आपके गोडाउन से रिकवरी. और ट्रक पे पड़ा हुआ है जो लाए हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने मंगाया है जिन वो सब लोगों ग्राउंड ही नहीं है. जी. उस पर तो मैं कुछ भी 1000 लीटर वहां रहता तभी मैं बेल ने. वो नहीं है. हमें डाउट है ये अग्रीमेंट कहा जाएगा तो हम गोडाउन का फोटो फाइल कर देंगे नहीं, उसमें पूरा, कोई हमको दिक्कत नहीं. एक मिनट हम इसकी ये देख लें. ओनर जी. गोडाउन सिरोली टोले किस पार्ट का लिए? ये तो पहला जो आपका पहले का है वो गलत है. किसके लिए है ये नहीं पता. जैसे आपने लिखा है कौन सा पार्ट कहां पर है, ये तो ऐसे ही है. कौन सा बिल्डिंग? कुछ कहा जाएगा पूरा हम लोग मैप ऑफ द गोडाउन नहीं तो अभी आज के दिन में खत्म हो गया ना. रामनगरा प्रखंड रीगा सीतामढ़ी अवस्थित खाता नंबर 100 पर बने गोदाम. साइज ऑफ द गोडाउन जो दे देंगे, लैंड दे देंगे, कितना एरिया है. कोई हमारा क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, कभी वी वर नॉट फाउंड इन पोजीशन. No, we are not getting persuaded, sir. This is the situation, my lord. We are not getting persuaded. See, there are two reasons. Yes, sir. Normally we don't look at the document so intently if we are deciding the issue of bail. Now, but you realize that this kirayanama, which is prior to the FIR, which can come to your help. Yes, sir. Now, this lacks in material particulars about the area of the godown, the exact address. What you had shown on the last occasion, this appears to be a genuine lease agreement. But this lease agreement also is of a later date, and that also during the period when your godown was sealed. Now, which lessee would have taken it for rent, a sealed premises, and the period of lease begins, I mean, halfway through, only for 11 months. I mean, it appears to be doubtful in the first instance. But still, my lords, the materials on the record. Now, Mr. Agarwal, that I am not ordering for any inquiry with respect to wrong statement is good enough. Don't press this petition for bail. If the court digs into the real state of affairs. Our duty is, my lords, I mean, only maybe disposed of. If I go in greater detail, perhaps I would find 100 more reasons. Correct. To initiate a separate prosecution against your client. Only disposal may be ordered, my lords. The consequence will follow. All right. What is the quantity of liquor recovered? It's around 4,000. See, normally I would not call for diary in a case of easy act. Yes, my lords. On the last occasion also, this was observation of my lords that usually I don't call for. What is the quantity It recovered? is 2739 liters, my lords. Look here. Heard Mr. N.K. Agarwal, learned senior advocate for the petitioner and so-and-so for the state. The petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with so-and-so. Stop. The accusation against the petitioner is that in his godown, approximately 3,000 liters of liquor was found kept. Stop. Learned counsel for the petitioner has drawn the attention of this court to the fact that the godown in question was let out on rent. Stop. 2 rent agreements have been brought on record. One which came in existence before the institution of the FIR, and the other
after the registration of the FIR, but during the period that the Godown premises were found to have been were sealed. Both the documents do not inspire confidence for this court to believe that the petitioner was not in constructive possession of the liquor. First up, this court is not persuaded to grant anticipatory bail to the petitioner, notwithstanding the fact that he does not have criminal antecedents. For the reasons aforestated, the prayer for anticipatory bail is rejected.